की बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं टिप की। टिप इज थ्योरी इनटू प्रैक्टिस, यानी कि जो भी हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं टू असेस द पेशेंट and see the and make a diagnosis and formulate a case so that we'll be able to make a treatment plans, start the medication and see the response. So long case is all related to tip, the theory into practice. So the whatever we know of psychiatry, we have to implement it on the patient, and then we have to make all the diagnostic and management strategies to get him improved. डॉक्टर साहब जब ज्वाइन कर लें तो मुझे बता देना, मैं जस्ट टाइम वेस्ट ना हो इसलिए ये चीज़ शुरू कर देता हूँ. सो वेन एवर वी हैव टू स्टार्ट फॉर अ लॉन्ग केस, we have to prepare certain things. Like back in the early last century, when the psychoanalytical, psychodynamic paradigm was the only, well, one of the leading methodology of treating psychiatric patients, there was a couch. फ्रॉयड ने जो इंट्रोड्यूस किया और वहाँ पेशेंट लेटता था, then they used to communicate, talk, and then you would like to understand what's happening to them. Now things have changed. Now time is the crucial thing, and for long case in exam situation, time is very, very, very crucial. I'm saying it again and again, time is very, very, very crucial. So whatever you do in a long case in an exam situation, make sure that you are wearing a watch, and as soon as the exam situation bell rings and the time starts for you to interact with the patient and start evaluating the patient, your start watch should be at a zero position, and exactly after 45 minutes, that watch should stop. It should restart for another 15 minutes, stop, and then you are good to go. So वो एक घंटा for the long वो case. आ गए हैं सर. ओके गुड. सो एक घंटा जो लॉन्ग केस का है वो पूरा टाइम बार्ड सिचुएशन में. सो लॉन्ग केस एग्जाम सिचुएशन में एक घंटा, 45 मिनट्स विद पेशेंट, 15 मिनट्स विदाउट पेशेंट टू रीअसेस एंड राइट इट डाउन. सो जब भी हम पेशेंट के साथ बैठते हैं, सो हम देखना चाहते हैं what are your mental health symptoms, what are your troubling thoughts and behavior, what makes the symptoms worse, how long do the symptoms last, how often do the symptoms occur, things like that. So we usually ask these questions, but in long case, key is the time. So in exam situation, when you are sitting with the patient in an exam, your watch is the key thing. आम तौर पे मैं जो घड़ी प्रेफर करता हूँ वो इस किस्म की घड़ी प्रेफर करता हूँ कि जी एग्जाम में आपके पास एक स्टॉप वॉच टाइप की घड़ी होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको टाइम का एहसास रहे कि कितना टाइम मरीज के साथ गुजर रहा है. मोस्ट ऑफ द टाइम 45 minutes is a very concise and precise time, especially when there are examiners sitting on your head and watching you. The time passes very quickly. So आपको वक्त का एहसास नहीं होगा तो आप मिस्टेक करेंगे. So आपके पास वक्त का एहसास, so आप बिफोर गोइंग इनटू द लॉन्ग केस आपको तीन चीजों की प्रैक्टिस करनी. एक, हर काम वक्त पे हो. दो, वो जो काम आप पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो 45 मिनट्स हो. तीन, उस 45 मिनट्स में हर चीज आपकी पैरामीटर्स फुलफिल हो जाएं. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना. सो व्हेन यू से कि 45 मिनट्स में मरीज के साथ आपको टाइम गुजारा जा रहा है, तो व्हाट आई सजेस्ट एंड रिकमेंड इज, एज सुन एज यू स्टार्ट अ लॉन्ग केस, बेल बजने से पहले आपको एग्जाम के हॉल में एंटर करवा दिया जाता है. उस हॉल में एंटर होके आप मरीज की टेबल पे जहां जो भी एलोकेटेड आपकी जगह है वहां आपको बिठा दिया जाता है. एग्जामिनर बाद में आपके सर पे आके बैठता है. सो आपने वहां पे एक सादे कागज के ऊपर तमाम वो हेडिंग्स लिखनी है जो आपने मरीज से पूछनी है, और वो पूरी वही हेडिंग्स होंगी जो हेडिंग्स यूजुअली हम वार्ड्स में इस्तेमाल करते हैं.
So the headings will be 1. Demographic, 2. Presenting complaint, 3. History of present illness, past history, personal history, family history, pre-morbid personality, mental state examination, और उसके बाद physical examination, diagnosis, predisposing, precipitating, and maintaining factors, treatment strategies, and other treatment modalities. ये हेडिंग्स आपने एक सादे कागज पे लिख के अपने सामने रख लेनी है, और जैसे जैसे आपको पेशेंट के जवाब मिलते जाएंगे आप उसको चेक करते जाएंगे कि ये बात मैंने पूछ ली. सॉरी, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट मैं भूल गया. सुसाइड रिस्क असेसमेंट, homicide risk assessment, and any aggressive behaviors, right? और forensic problems. वो खैर इसके बीच में ही कवर हो जाती हैं, लेकिन अलग से भी हेडिंग्स लिख लें तो ज्यादा अच्छा है. सो मरीज को असेस करते हुए लॉन्ग केस में ये जितनी हेडिंग्स हैं ये मिस ना हो, पहला टारगेट. दूसरा, ये टाइम पर हो जाएं, दूसरा टारगेट. तीसरा, जब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी तो जो मरीज के बाद 15 मिनट आपको मिलेंगे उसमें फिर आपको फॉर्मुलेशन लिखनी है. मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि आप लोग हर लफ्ज लिखें. एग्जाम में कुछ कैंडिडेट्स जब लॉन्ग केस में बैठते हैं मरीज के सामने तो वो एक गत्ता और कागज पकड़ लेते हैं और फिर मरीज से सवाल पूछते हैं, अच्छा आपको नींद आती है, और फिर वो लिखते जाते हैं हर चीज को. आपको भूख लगती है, आपने खाना खाया, आप कहां से आए हैं, आप बैठे कहां हैं. डोंट डू दैट. सो राइट ओनली द पॉइंट्स दैट यू फील दैट यू विल फॉरगेट. So you have to make sure that you are assessing the patient in 45 minutes with the headings and the points which you feel are important for you. सिर्फ उनको लिखें, हर चीज लफ्ज ब लफ्ज पूछ के मरीज से लिखने मत बैठें. So अगर if you'll start writing everything, then you will lose your concentration of asking the questions in a free flow manner, and your communication will be interrupted by repeated writings. So some people are good in it. अगर आपके पास टाइम अनलिमिटेड हो तो आप जरूर लिखें, लेकिन वहां पे टाइम बहुत शॉर्ट है. 45 मिनट ऐसे गुजरेंगे, एहसास नहीं होगा. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस इन अ वे दैट यू एंटर इनटू द एग्जामिनेशन रूम, you write down the headings, you start asking the questions from the patient. In 45 minutes, complete all the assessments. Then the patient goes away, and then you write for next 15 minutes and write down your formulation. That is important for you. So this is the brief methodology that I suggest all of you to go for it. Now, who wants to present the case? फिर उसके बाद हम मजीद डिस्कशन इस पे कर लेंगे. Who wants to present the case? Okay. You can't see the picture. तमीना मोबाइल थोड़ा सा आगे पीछे करो, फिर तस्वीर नजर आएगी. यहाँ एक डॉक्टर साहब हैं, जुहेब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी डॉक्टर साहब. सर मेरा नाम डॉक्टर फजलुल्लाह है. क्वेटा से बिलोंग करता हूँ. आज मैंने केस प्रिपेयर किया लॉन्ग केस के. हेलो जी जी, मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब आपकी आवाज आ रही है. थोड़ा सा करीब होके रिलैक्स होके बैठ जाएं बिफोर वी स्टार्ट. ओके सर, आई एम प्रिपेयर. गुड. अब मुझे सिर्फ 3 सवालों के जवाब दीजिए. आपने जब ये केस प्रिपेयर किया था तो आपने टाइम नोट किया था, कितना टाइम आपको लगा? हाँ सर, मुझे 45 मिनट्स लगे थे. गुड. ओके. और आपने उसमें साथ साथ लिखा था या बाद में इसको तैयार किया? नहीं सर, मैं पॉइंट्स उसी वक्त लिखता रहता हूँ. आपने जैसे मना किया अभी, तो ये प्रैक्टिस मेरी है कि मैं उसी वक्त नेम वगैरह ये चीजें. अगर आपकी प्रैक्टिस है और आप साथ साथ पॉइंट लिख सकते हैं विदाउट लूजिंग द फ्लो ऑफ द असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, आई डोंट माइंड दैट. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अगर आपने लिखा है और उसकी आपको आदत है तो ठीक है. पेशेंट को प्रेजेंट करने में आपने मुझे उसका नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं बतानी.
सो उसको एनोनिमस रखना है, ठीक है। बाकी सारी हिस्ट्री जो भी आपने ली है वो आप बोलते जाइएगा। ओके, सो वेन एवर यू आर रेडी यू कैन स्टार्ट एंड आई विल बी लिसनिंग टू इट। अगर मुझे आपकी आवाज कहीं जगह पे रुकती महसूस हुई या खराब हुई तो मैं आपको रोकूंगा, वरना अगर मेरी तरफ से कोई आपको यस और नो का जवाब ना आए तो आप समझें मैं सुन रहा हूं, आप बोलते जाएं। ओके सर, मैं स्टार्ट करूं? बिल्कुल। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि हम एग्जामिनेशन की तरह ही चलें, और दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं आपको साथ साथ करेक्ट करूं। अगर मुझसे पूछो तो मैं आपको एग्जाम की तरह लेके चलना चाहता हूं, और फिर बाद में हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि जी आपने सर, कहां बेहतर कहां वही फेल रहेगा। किया। ठीक है, ओके। सो डॉक्टर साहब, यस यू कैन स्टार्ट Sir, नाउ। sir, I am beginning my case. Young male, single, Mr. XYZ is a Muslim resident of Quetta. He was brought by his father against his will on 1st of January of this year for his violent behavior. He is bachelor in mechanical engineering from Peshawar University. He is the sole informant of his condition. No attendant is accompanying him at the time of history. Patient is reluctant to give his detailed history. Patient from past 6 months, patient is suffering from ideas of self-importance, suspicious behavior, aggressive and abusive behavior, and decreased need for sleep. Um, According to patient, he was all right. From past 6 months, he has ideas of self-importance, that he has spiritual powers, and has paranoid ideas that people are in effort to harm him, and has been in physical and verbal violence with father. He is over religious from past 6 months. Patient is careless on spending money. He sleeps few hours, and patient is reluctant in giving substance use history. He is denying any substance abuse from past few months. He has good hygiene and normal appetite. There is no history of self-talk and wandering at large. Patient is taking cannabis since 2015 when he was studying in university. At the start, he smoked for pleasure and adventure seeking. Gradually and persistently, he became dependent and developed tolerance on next few months. He felt strong compulsion to smoke weed, which enhanced his attention and concentration and positive effect on his mood. And absence of use would result in dysphoria, aggression, insomnia, and loss of appetite. His education and social life was impaired, and he had no desire for other hobbies due to this substance abuse. He was avoiding to visit his family in vacations. According to patient, he had been uh, consequences on his physical health, but could not left cannabis. He has also took alcohol on 2 occasions, but it was not regular, and he had never any tolerance and dependence on alcohol. Uh, patient has no patient has been arrested by police twice, and has currently his functionality is impaired in all three domains. His parents are alive and well. Family history, sir. His mother has been diagnosed with cancer. Currently, she is in good health after treatment. Father, father has no known history of illness and substance use history. Patient's relation with father are not good. They usually do not communicate with each other. Patient is second among 8 siblings. Siblings also have no good relation with each other and with parents. There is no history of substance use or mental illness or suicide in family. Patients has vast extended family in Quetta, but their relations are limited. No history of mental illness or substance use history in extended family. In past, patient was treated by Farid Mehna Sahab. Uh, sorry, patient was treated by a psychiatrist. He has prescribed her. No names, please. No names. Okay, sir. You just have to mention he was under the treatment of a psychiatrist. I apologize for it. He No, was no, prescribed. it's okay. He was prescribed him escitalopram, which improved his mood. Patient is not sharing further details of illness, of his past illness. Personal history. Patient is sole informant of hindsight, therefore elaborating prenatal, antenatal, and postnatal
An early developmental milestone history is not possible. He has been vaccinated. He had been good in school and college studies, but he had never participated in stage due to his shyness. He had not been tyrant from school. He completed his secondary education from Science College and then got a scholarship from HEC Peshawar University. He failed to complete his course in due 4 hours due to his substance abuse behavior and given another year to complete it. Forensic history. He has been arrested in several occasions by Peshawar police for possession of illicit drugs and then bailed from court but never been jailed. Psychosexual history. He attained his puberty at the age of 13 years. Patient used to masturbate twice a week. He is denying any heterosexual or homosexual physical relation. He is straight in sexual preferences and not married yet. Patient is denying any illicit unsafe sexual relations. He has no any inmate sexual fantasies or pedophilic intention and has never been abused in early childhood. Pre-morbid personality. Patient had borderline personality traits like self-harm, quarrelsome with family members, fear of abandon, and chronic feeling of emptiness. These are the personality traits of cluster B. General physical appearance. Young person of average height and build, sitting in chair with strained physical posture, has good eye contact. He is in traditional shalwar kameez, well kept, as good and has good hygiene, has long and well kept hair. He has cigarette scar marks or in left forearm, no tattoos or scar marks found in the body. Mental state examination. Speech is normal in tone and volume. Loosening of association is present. Mood. Patient is elated in both subjective and objective assessment. He appears mildly aggressive. Perceptual disturbance. Patient as auditory second person hallucination. Patient has been experiencing visual hallucination. There is no olfactory, gustatory, or somatic hallucination. There is no third person or commentary hallucination or other type of hallucination like persecutory.